लॉन्ग क्वेश्चन वन क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट CLD मतलब हो गया क्रॉनिक लिवर डिजीज कम्स टू कैजुअलिटी विथ हेमाटेमेसिस ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसेस मतलब इसोफेजियल वायरसेस ब्लीड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट क्या होगा. पहले आ गया क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ब्लड पिक्चर एनीमिया इज यूजुअली प्रेजेंट ड्यू टू ब्लीडिंग पेरिफेरल smear to rule out hypersplenism peripheral smear to rule out hyperspleen pancytopenia in presence of a normal bone marrow hypersplenism pancytopenia in presence of normal bone marrow liver function test हो गया serum proteins total protein albumin are low and albumin to globulin ratio is reversed in cirrhosis of liver total protein albumin are low and albumin globulin reverse in cirrhosis of liver enzymes SGOT SGPT increase in hepatocellular failure serum bilirubin increase serum bilirubin indicates liver cell failure prothrombin time bleeding time clotting time must be checked for before liver biopsy is done liver biopsy is provided bleeding profile is normal. However, injection vitamin K 10 mg intramuscular is given 3 to 5 days. HbS antigen serum hepatitis predisposes to cirrhosis of the liver. Liver functions are usually normal in extrahepatic or portal hypertension. Liver functions are usually normal in extrahepatic portal hypertension. Esophagogastroduodenoscopy OGD esophagogastroduodenoscopy to confirm esophageal varices which appear as a bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus which appear as a bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus. When they extend to the stomach they are called gastric varices. When they extend to the stomach they are called gastric varices. Cherry red spots indicate impending rupture. Cherry red spots indicate impending rupture. Grading of the varices grade 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus bite width 1.7 forceps is equal to 5 mm. 1/4 bite width plus 1 plus 2 plus हो गया 1/2 bite width 3 plus हो गया 3/4 bite width 4 plus हो गया 4 1 or more bite width 1 or more bite width हो गया. Grading of varices. Esophagogastroduodenoscopy to confirm the esophageal varices which appear as a bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus. To confirm the esophageal varices which appear as a bluish esophagoduodenoscopy to confirm the esophageal varices which appear as a bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus. When they extend to the stomach they are called gastric varices. When they extend to the stomach they are called gastric varices. Cherry red spots indicate the impending rupture. Cherry red spots indicate the impending rupture. Grading of varices grade 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus ultrasound to assess the nature of the liver cirrhosis to know the. तो पहले है कंप्लीट ब्लड पिक्चर. कंप्लीट ब्लड पिक्चर में क्या देखोगे अनीमिया ड्यू टू ब्लीडिंग और फिर पैनसाइटोपिनिया हाइपरस्प्लेनिज्म हो सकता है पैनसाइटोपिनिया हो सकता है. पेरिफेरल्स में देखोगे हाइपरस्प्लेनिज्म अनीमिया हो गया टू यूज इज प्रेजेंट इज यूजुअली प्रेजेंट ड्यू टू ब्लीडिंग. कंप्लीट ब्लड पिक्चर फिर क्या होगा लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या होगा SGOT SGPT रेज्ड होगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम मस्ट बी चेक्ड होगा. लिवर बायोप्सी इज डन प्रोवाइडेड ब्लीडिंग प्रोफाइल इज नॉर्मल. हाउएवर इंजेक्शन विटामिन K 10 mg इंट्रामस्कुलर इज गिवन फॉर 3 to 5 days. और क्या हो गया लिवर बायोप्सी इज डन provided bleeding profile is normal. However, injection vitamin K 10 mg intramuscular is given for 3 to 5 days. Serum bilirubin हो गया increased levels indicates liver cell failure. Serum proteins हो गया total protein albumin are low and albumin to globulin ratio is reversed in cirrhosis of liver. Total protein albumin are low and albumin to globulin ratio is reversed in cirrhosis of the liver. Enzyme SGOT SGPT is raised. Serum bilirubin is raised. SGOT SGPT is raised. Serum albumin is raised. Serum bilirubin is raised. Albumin globulin reversal is happening. Prothrombin time, bleeding time and clotting time must be checked before a liver biopsy is done. Liver biopsy is done provided bleeding time profile is normal. However, injection vitamin K 10 mg intramuscular is given for 3 to 5 days. HbS antigen hepatitis predisposes to cirrhosis of liver. HbS antigen serum hepatitis predisposes to cirrhosis of the liver. Liver functions are usually normal in extrahepatic portal hypertension. Esophagogastroduodenoscopy किस लिए कर रहे हैं गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी कर रहे हैं ताकि इसोफेजियल वायरसेस और ब्लूइश रेड
Longitudinal column in the lower end of the esophagus. When they extend to the stomach, they are called gastric varices. Cherry spots indicate the impending rupture. Cherry spots indicate impending rupture. ग्रेडिंग ऑफ वायरसेस में होगा ग्रेड +1, 1+, 2+, 3+, 4+। 1+ में हो गया क्या 1/4 बाइट विड्थ, 2+ में हो गया 1/2 बाइट विड्थ, 3/4 हो गया 3+ हो गया 3/4 बाइट विड्थ, 4+ हो गया 1 or more बाइट विड्थ। The endoscopic grading of varices based on the varic site at 2 cm from esophagogastroduodenoscopy. Ultrasound to assess the nature of the liver cirrhosis, to know the portal cavernoma, splenic vein diameter, etc. It has become a valuable investigation today. In primary prophylaxis before bleeding, this is aimed at reducing portal pressure and consequently intraventricular pressure, intravaricial pressure. This is aimed at reducing portal pressure and consequently intravaricial pressure. Pharmacotherapy drugs used are non-selective beta blockers alone, propranolol, or in combination with isosorbate mononitrate. Pharmacotherapy drugs used are non-selective beta blockers alone, propranolol, and or in combination with isosorbate mononitrate. और इन कॉम्बिनेशन विद मोसोसोर्बेट मोनोनाइट्रेट। एंडोस्कोपिक थेरेपी में हो गया एंडोथेरेपी। एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन ऑफ द वेरिसेस इज बेटर दैन स्क्लेरोथेरेपी। एंडोस्कोपिक बैक लाइगेशन ऑफ द वेरिसेस is better than sclerotherapy. It is very effective and associated with less side effects. Indicating patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and associated with red wheal markings. Indicating patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and associated with red wheal markings. Indicating patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and are associated with red wheal markings. Secondary prophylaxis. Primary prophylaxis before bleeding. This is aimed at reducing portal pressure and consequently intravaricial pressure. Pharmacotherapy drugs which are used are non-selective beta blockers alone, propranolol, or in combination with isosorbate monohydrate. Endoscopic therapy. Endoscopic band ligation of varices is better than sclerotherapy. It is very effective and associated with less side effects. फिर क्या होगा indicated in patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and are associated with red wheal markings. Indicated in patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and are associated with red wheal markings. Secondary prophylaxis means prevention of rebleeding followed by acute varicose hemorrhage. It means prevention of rebleeding followed by acute varicose hemorrhage. It means prevention of rebleeding following acute varicose hemorrhage. The different forms of treatment and their success depends upon various criteria. The most popular of these is modified Child's criteria. Child Pew score for hepatic resolve. Pour another beer at 11 o'clock. PTINR, another beer. Albumin, B हो गया bilirubin at ascites 11 o'clock में हो गया encephalopathy. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. 1.7 से कम, 1.7 से 2.3, more than 2.3. albumin हो गया less than more than 3.5, 2.8 से 3.5, less than 2.8. bilirubin हो गया less than 2 to 3, more than 3. ascites हो गया no, यहाँ पे हो गया control, यहाँ पे हो गया uncontrol. encephalopathy 5 to 15, 5 to 6 हो गया A major hepatic resection. 7 to 9 हो गया B minor hepatic can be done. 10 to 15 हो गया C no minor procedure can be done. Liver transplant only. Child Pew score for hepatic resolve. Pour some beer, pour another beer at 11 o'clock. P से हो गया क्या PTINR. Another से हो गया albumin हो गया 3.5, more than 3.5, 2.8 to 3.5, less than 2.8. beer से हो गया bilirubin. 8 से हो गया ascites. 11 o'clock से हो गया encephalopathy. 5 to 15 ठीक है. 5 to 6 major hepatic resection. 7 to 9 हो गया B minor hepatic can be done. Resection can be done. 10 to 15 score है. No major or minor procedure can be done. 5 to 10 है. 5 to 6 है A majors can be done. 7 to 9 है तो minor hepatic score can be done. 10 to 15 है तो no minor major can be done. Liver transplant only. Treatment of massive bleeding from varices. General measures: admission, hospitalization, preferably in an ICU, elevation of food and out of the bed
to increase venous return. Okay, admission, hospitalization, preferably in ICU, elevation of foot end on the bed to increase the venous return, intravenous cannulation or venous cut down and replacement of fluid till blood is ready. Measures to prevent encephalopathy. Rice tube is introduced and stomach wash is given with ice cold saline. Rice tube is introduced and stomach wash is given with ice cold saline. Bowel wash is given to decrease blood from gut, to decrease ammonia and uric acid levels so as to prevent encephalopathy. Bowel wash is given to decrease blood from gut, to decrease ammonia and uric acid levels so as to prevent encephalopathy. Pharmacotherapy for varicose bleeding. Injections, octreotide and injections octreotide and terlipressin are preferred because of their long half-life. They act by producing splanchnic vasoconstriction, thus they decrease the portal pressure. Once started, they have to be continued for 2 to 5 days. Once bleeding stops, the varices are treated with endotherapy to prevent rebleeding. Once bleeding stops, varices are treated with endotherapy to prevent rebleeding. Endotherapy के types क्या क्या होता है? Varicose bleeding. Today, varicose banding has become the gold standard for esophageal varices because of their efficiency in controlling the bleeding and less chances of complication. Today, varicose bleeding has become the golden standard for esophageal varices because of their efficiency in controlling the bleeding and less chances of complication. In 10% of cases, rebleeding can occur. Sclerotherapy: 2% ethanolamine oleate or sodium tetradecyl sulfate is used 3 to 5 ml in each varix intravarical or 0.5 ml into side of varices paravarical. Balloon tamponade: balloon tamponade must be used as a rescue procedure and to bridge more definitive therapy in case of uncontrolled hemorrhage. Sengstaken's tubes or its modification, the Minnesota tube is used. It acts directly by internal tamponade. It is passed through the nose. Gastric balloon is distended up to 200 to 300 ml of air and esophageal balloon with about 50 to 60 ml of air or to get a pressure of 32. The tube devascularization procedures and shunt procedures. Pulse of wisdom: devascularization procedures are aimed at reducing the pressure in the varices by disrupting the blood supply, and shunt varices are aimed at reducing portal pressure. Devascularization procedures, Sugiura and Futagawa operation. It is an extensive devascularization procedure aimed to interrupt the intramural and submucosal veins. Procedure: in this procedure, following procedures are done: splenectomy, devascularization of the greater curvature of the stomach, and devascularization of the lesser curvature of the stomach, as in highly selective vagotomy. Esophagogastric transection and suturing by using EEA, end-to-end anastomosis staplers. It is a major surgery. Mortality is around 10 to 15%. It is most effective devascularization. So non-selective side to side, end to side portocaval, side to side portocaval, mesenteric caval shunt. अरे क्या है ये सब बकवास? प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस हो गया ड्रग्स और एंडोबैंड लाइगेशन. सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया चाइल्ड प्यू स्कोर. जनरल मेजर्स हो गया मेजर्स टू प्रिवेंट एंसेफेलोपैथी हो गया बावेल वॉश राइल्स ट्यूब. फार्माकोथेरेपी फॉर वेरिसेल हो गया. एंडोथेरेपी हो गया वेरिसेल बैंडिंग स्क्लेरोथेरेपी बलून टेम्पोरेंट. वेरिसेल बैंडिंग स्क्लेरोथेरेपी बलून टेम्पोरेंट. फिर गया टिप्स. फिर सर्जरी में क्या हो गया रिवेस्कुलराइजेशन. पीएस शंट हो गया नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव. टिप्स में क्या आ गया selective shunt advantage less hepatic encephalopathy. Distal splenorenal shunt. Warren's Inoguchi shunt left gastric vein and inferior vena cava. Inoguchi shunt left gastric vein and inferior vena cava. लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड इंफीरियर वेना कावा. पार्शियल में क्या हो गया ग्राफ्ट हो गया 8 mm 8 to 10. रेक्ट शंट हो गया राइट पोर्टल वेन लेफ्ट पोर्टल वेन. लेफ्ट पोर्टल वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. शंट इज प्लेस्ड. थ्रोम्बो end to side portocaval shunt. Side to side portocaval shunt
mesenteric caval shunt, mesenteric renal shunt, endocerebral shunt, proximal splenorenal shunt. ओके नेक्स्ट चलते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ये हाइड्रेटेड सिस्ट आता है क्या इसमें? मैडम भाई खेल गए गुरु, बढ़िया खेल गए। हाँ सब है। ओके gynecococcus granulosa for liver hydrated। तो क्रॉनिक अल्कोहल पेशेंट्स कम टू हेमाटेमेसिस ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसेस। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट क्या था? इन्वेस्टिगेशन में था ब्लड में करोगे ब्लीडिंग के लिए अनीमिया और स्प्लीनोमेगाली होगा पेरिफेरल स्मेयर। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या करोगे? जीओटी एसजीपीटी बढ़ा रहेगा और बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम देखोगे। लीवर बायोप्सी करने के पहले विटामिन के दोगे 3 से 5 दिन के लिए 10 mg IV इंजेक्शन और फिर HbS एंटीजन देखोगे। सीरम प्रोटीन में प्रोटीन बढ़ा रहेगा। एल्ब्यूमिन टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन कम रहेगा। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो रिवर्स हो जाएगा। और लीवर फंक्शन यूजुअली नॉर्मल एक्स्ट्रा पोर्टल टेंशन। फिर क्या करोगे? और तीसरा चीज़ ईसोफेगो गैस्ट्रोडोनोस्कोपी में करोगे। उसमें कन्फर्म esophageal varices which appear as bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus when they extend to the stomach. They are called gastric varices. Bluish red longitudinal column in the lower end of the esophagus when they extend to the stomach. They are called gastric varices. Cherry red spots indicate impending rupture. प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस बिफोर ब्लीडिंग में हो गया क्या? फार्माथेरेपी ड्रग्स यूज आर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सेलोन प्रोपानोल और इन कॉम्बिनेशन विद आइसोसोर्बर मोनोनाइट्रेट। एंडोस्कोपिक थेरेपी में क्या? एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन ऑफ वेरिसेस बेटर देन स्क्लेरोथेरेपी। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एसोसिएटेड विद लेस साइड इफेक्ट्स। Indicated in patients who do not tolerate beta blockers and varices which are large and are associated with red wheal markings. Secondary prophylaxis, it means prevention of rebleeding following acute variceal hemorrhage. There different forms of treatment and their success depends on various criteria. The most popular is the modified child criteria, child Pew score. Child score में क्या होता है? Pour another bottle of beer. Pour another beer at 11 o'clock. पीस हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अंदर से हो गया क्या? एल्ब्यूमिन। बियर से क्या हो गया? प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन नहीं PTINR। पोर अनदर पी से हो गया PTINR। अनदर ए से हो गया क्या? एल्ब्यूमिन। फिर क्या हो गया? बिलिरुबिन। बियर एट 11 o'clock। ए से हो गया PTINR, एल्ब्यूमिन। फिर क्या हो गया? बिलिरुबिन। फिर क्या हो गया? साइटिस। PTINR एल्ब्यूमिन। फिर क्या हो गया? PTINR एल्ब्यूमिन
बिलीरुबिन, फिर क्या हो गया साइटिस, और फिर क्या हो गया एंसेफेलोपैथी। PTINR, फिर क्या हो गया एल्ब्यूमिन, फिर क्या हो गया बिलीरुबिन, फिर क्या हो गया साइटिस, फिर क्या हो गया एंसेफेलोपैथी। PTINR एल्ब्यूमिन, PTINR एल्ब्यूमिन, बी से क्या हो गया, बी से हो गया बिलीरुबिन, असाइटिस, एंसेफेलोपैथी। It means prevention of rebleeding following acute varicose hemorrhage. The different forms of treatment and their success varies depends on various criteria. The most popular criteria is this modified Child's criteria. Treatment of massive bleeding from varices. General measures to prevent encephalopathy. Pharmacotherapy for varicose bleeding. टिप्स में क्या हो गया, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोटोसिस्टमिक stent shunt consists of vascular placement of expandable metal stent across the tract created between hepatic vein and major branches of portal system. Tips: trans intrahepatic jugular general measures admission, hospitalization preferably in an ICU, elevation of foot of the bed to increase venous return. Measures to prevent encephalopathy: Ryle's tube is introduced and stomach wash is given with ice cold saline. Bowel wash is given to decrease blood from gut, to decrease ammonia and uric acid levels so as to prevent encephalopathy. Pharmacotherapy for varicose bleeding: injections octreotide and terlipressin are preferred because of their long half-life. They act by producing splanchnic vasoconstriction, thus they decrease portal pressure. Once started, they have to be continued for 2 to 5 days. Once bleeding stops, the varices are treated with endotherapy and prevent rebleeding. Once bleeding stops, the varices are treated with endotherapy to prevent rebleeding. Endotherapy types: varicose bleeding हो गया, Marnie, where today varicose banding has become the gold standard for esophageal varices because of their efficiency in controlling the bleeding and less chances of complication. In 10% of cases, rebleeding can occur. स्क्लेरोथेरेपी में क्या हो गया, 2% इथानोलामाइन ओलेट और सोडियम टेट्रास डेसाइल सल्फेट STD क्या हो गया, सोडियम टेट्रा डेसाइल सल्फेट इज यूज्ड 3 to 5 ml into each varix इंट्रावेरिसल और 5.5 ml into the side of varices paravaricil. इथानोलामाइन ओलेट और सोडियम टेट्रा डेसाइल it is used 3 to 5 ml in each varices or 0.5 ml into the side of the varices. Balloon tamponade. Balloon tamponade must be used as a rescue procedure and to bridge more definitive therapy in case of uncontrolled hemorrhage. Stangen's tube or its modification. The Minnesota tube is used. It acts directly by internal tamponade. It is passed through the nose. Gastric balloon is distended by the up to 250 to 300 ml of air, and esophageal balloon with about 50 to 60 ml of air to get a pressure of 20 to 30 ml mercury. और फिर क्या हो गया, टिप्स: ट्रांस इंट्राजुगुलर पोर्टल सिस्टमिक शंट, पोटेशियम शंट, systemic stent shunt consists of vascular placement of expandable metal stent across the tract created between hepatic vein and major branch of portal vein. Tips: helps a small group of patients, 5 to 10%, who have refractory bleeding, low mortality and morbidity. Incidence of encephalopathy is similar to surgical stent. Management of acute esophageal bleeding is shown in figure this. Surgery is a two type: devascularization and procedure and shunt procedure. Devascularization procedure: Sugiura and Futagawa operation. Aim to interrupt the intramural and submucosal veins. Procedure हो गया in this operation. The final procedure is aneurysmectomy. Devasculation of the greater curvature of the stomach and devasculation of the lesser curvature of the stomach, as in highly selective vagotomy. Devasculation of the greater curvature of the stomach and devasculation of the lesser curvature of the stomach, as in highly vascular vagotomy. Esophagogastric transection and suturing done by using EE staplers. It is a major surgery. Mortality is around 25%. Most effective devascularization. Devascularization, PS shunt, non-selective. एंडोथेरेपी हो गया, वेरिसल ब्लीडिंग, स्क्लेरोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी और वेरिसल में क्या हो गया, फार्माथेरेपी में क्या हो गया, फार्माकोथेरेपी में बेसिकली हो गया बीटा ब्लॉकर्स और मोनोनाइट्रेट. चाइल्ड प्यू स्कोर में क्या क्या हो गया, PTINR
albumin, bilirubin, ascites और encephalopathy. टिप्स में हो गया ट्रांस इंट्राजुगुलर इंट्राहेपोटल सिस्टमिक शंट, इंट्राहेपेटिक ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट. लो मोर्टेलिटी एंड लो मॉर्बिडिटी. एंडोथेरेपी में क्या, वेरिसेल बाइंडिंग, स्क्लेरोथेरेपी और बलून टैपनेट. फार्माकोथेरेपी और वेरिसेस में क्या क्या आ गया, इंजेक्शन लाइक ऑक्ट्रोट्राइड एंड टर्लीप्रेसिन और ऑक्ट्रोट्राइड. और मीन्स टू प्रिवेंट एंसेफेलोपैथी में हो गया बॉवेल वॉश राइज ट्यूब. मीन्स टू प्रिवेंट एंसेफेलोपैथी हो गया बी. उसमें क्या क्या हो गया, राइज ट्यूब, बॉवेल वॉश राइज ट्यूब, बॉवेल वॉश राइज ट्यूब.